Hi, Rupal. Also, have we had any word from Miss Astha as well? She'll be joining shortly, Shaheen. So Okay, okay, sure. is the audio better? Hello? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes. Although Miss Devika, we can't see you. Yes. Is it Thank you so much, visible ma'am. now? Yes, ma'am. It's okay. Thank you so much. Although, okay, so Miss Astha Dhingra will be joining us shortly. So without any delay, I think because it's 4 p.m. already, let's start with the webinar. So, hi everyone, a very good evening to all of you. I hope all of you are staying safe and keeping healthy. A warm and a humble welcome to all of you to the webinar series by Sharp under Youth and Adolescent Health. So my name is Shaheen Rehman. I work for Sharp and I will be your moderator for today. But before we move ahead, let me give you a brief introduction about SHARP NGO. SHARP stands for School Health Annual Report Program. It is a non-government organization and we have been working for over 22 years in the field of holistic development and healthcare of students and children. So we at Sharp, we believe, and we always try to educate and have open conversations on problems related to youth and adolescents. We did this during the pandemic and we are doing it after it also. So through these webinars series, we hope to spark discussions on some very important yet sensitive topics which are pertaining to today's youth demographic. So in today's webinar as well, we are aiming to educate and bring in awareness on understanding and overcoming procrastination, time management techniques. So we will also try to shed some lights upon how procrastination affects time management and how can students especially avoid procrastination and manage time better. And within this, I think even adults will get some ideas about procrastination because we adults also, we don't lag back when it comes to procrastination. So as we all know, procrastination is the tendency to delay or unreasonably postpone a task. And before we realize it, it usually becomes a habit and it starts affecting everyone to a lesser or at times even at a greater extent. So time management and procrastination are related, we believe, and managing our time effectively can help us feel in control of our workload and also increase our productivity and improve our confidence to a very great level. So today, to throw more light on this topic, we have experts with us, and we will be understanding and overcoming and try to overcome procrastination. We will try to steal some tips from our panelists, and we'll also learn some time management techniques from our panel. So without making any delay, let me introduce you to our panelists. So we have Ms. Devika Raje. We have Ms. Asha Jain, and also I believe Ms. Astha Dhingra will be joining us very shortly. So if I talk to you about our panelists one by one, very interesting panelist we have today with us. We have Ms. Devika Raje, who is a licensed clinical psychologist with over 4 years of expertise and experience in the field of clinical psychology. She has a very good experience of working in hospital, university, NGO, and even in private practice settings. So currently, Ms. Devika is associated with FGT Medical College Hospital and Research Institute as an assistant professor. And apart from providing mental health services to a very broad spectrum of patients in the clinical psychology and psychiatry ward, ma'am has also had the experience of working closely with her students. So Ms. Devika, we welcome to our webinar today. Thank you so much, Shaheen. So next up, we have our next panelist, Ms. Asha Jain. Ms. Asha Jain has completed her master's from Pune University and practicing in this field for the past 6 years. She has also worked as a school counselor and quite comfortable dealing with the students and as well as adults with anxiety and mood-related issues. So it will be a perfect platform to discuss all these issues today with us today. So Ms. Asha, welcome to our webinar. Thank you so much, Ryan.
Rupal, can you please tell me if Miss Astha has joined? Yeah, Miss Astha has joined. She's here. Okay. All right. So, yes, we have our next panelist with us. She is Miss Asta Dhingra. And talking about her, she is an assistant professor in SGT University in Gurugram and a clinical psychologist. And for the past 10 years, she has worked as a trainer for a variety of educational and business institutions across India. She has approximately 20 publications in national and international periodicals and to her name, and to have written and edited 2 books as well. She has been a guest expert and a speaker on psychology in a number of platforms, and her work has been recognized by a number of institutions across India, including Gurgaon District Administration. So, Ms. Astha, we welcome you to the webinar. Thank you, Shaheen, and thank you everyone else for being there. Thank you so much. Thank you so much. Thank you to all the panelists for taking the time to join us in this webinar, actually. Most welcome. Pleasure. Okay, so yes, before moving ahead with the webinar, few instructions before we start it. At first, we will have a round of discussions with our panelists, and it will be followed by a Q&A round. Soon after this, we will request the audience to drop their questions in the Q&A box, and we will be taking live questions from them. And 2 best, sharpest questions, as we like to say, will be the winners, and they will be gifted with vouchers worth rupees 500 each. So apart from this, additionally, we request the audience not to fill the chat box with unnecessary messages, because at times we tend to miss out the important questions or some important things that you are wanting to tell us. Okay, so before we go into the depth of the topic, let's start the conversation with very basic yet very important questions. These questions are from the common people. I think most of the attendees that have joined will have some questions to start the conversation. So on behalf of them, I would like to take a few. So the first question, I think Ms. Asha, if you would be able to tell us, just in a very layman language, if you could tell us what is procrastination and how we can relate the same with time management. See, first of all, procrastination is something that we as an individual do out of habit, out of lack of motivation. So there are many factors to it. So just saying that, we are deliberately trying to avoid certain things for a short span of time is at present not the only concept of procrastination. So definition भी change हो रही है time के साथ, time change हो रहा है, lifestyle change हो रहा है. So आपका अगर lack of confidence आता है, बहुत सारे factors हैं जो कई बार हमें लगता है इसकी आदत है इस चीज को टाल के करने की, अवॉइड करने की, बट आपका कॉन्फिडेंस कितना है, हमें डर लगता है, देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर इन अस, वी फील दैट if we will do this or if we are not able to complete this in a given stipulated time, we will fail, and hence we don't start even with the concept altogether. कोई असाइनमेंट दिया तो स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि पता तो है ही लेट सबमिट करने पे भी नंबर तो उतने ही देने हैं, टीचर जानती ही है हमको. सो वो कंसेप्ट जब एंटर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट डेवलप हो जाती है. देन कई लोग मेरी तरह परफेक्शनिज्म वाला होता है ना, हमें हर चीज डेडलाइन पर परफेक्शनिस्ट देनी है, असाइनमेंट पे की शीट पर एक डॉट भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए. सो फॉर अस आल्सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बी एबल टू वो डेडलाइन अचीव करने के लिए भी हम काफी चीजें टाल देते हैं. फर्स्ट लेट्स गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, कोई चीज छूट नहीं जानी चाहिए, गूगल के भी सारे सर्च इंजन होने चाहिए हमारे पास, हमें पता होने चाहिए, एंड देन ऑल द बुक्स, everything that is required to complete this project, this assignment, this task, and hence there is a delay, which wherein we enter and say that this is procrastination. We delay things because of that. Then at times we are very anxious, we have a low mood, we have bad moods, and we think that it's not the right time, I don't want to do it right now, and we procrastinate. Most of the times we see we are very low at energy, हमारा मन ही नहीं है करने का, बहुत बॉडी लैंग्वेज बहुत ढीली है, ठीक है कर लेंगे, 5 दिन का टाइम दिया, चौथे दिन पर रात को देखेंगे, whatever we want to do we'll do, and hence
when we have so many things or some of these things that we face in our day-to-day life, when we make a timetable, we have Monday 9 से 10 क्या करना है, Tuesday 10 से 11 क्या करना है, right? That is how we make a timetable. So now in this timetable, when we don't know on the 4th day we are going to do it, or on the 3rd day, 9th we are going to do it, the time can never be managed. So we are giving way and we are giving space for a lot of other things to enter in and tell us and disturb our schedule, hence leading to low confidence बाद में, और confidence low हो जाएगा, और self esteem पे हमारे जोर पड़ेगा, and then that हम कहते हैं ना आखिरी में फिर कमजोर कंधों पे जोर आता है, and then हम कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी करके सबमिट करते हैं, किसी भी तरह पेपर की तैयारी करेंगे. So that is how we tend to, because of procrastination, we tend to have a bad time management. So I personally believe that ये सारे factors होते हैं, इस हिसाब से हमारा जो time है वो सारा ऊपर नीचे हो जाता है. तो अगर हम इन factors पे काम करें individually, और हम ये देखें that this is not our habit, and if we work on our anxieties, on our concerns, on why we are qualifying things right now, probably we'll be able to fix that when we are making a schedule or when we are making a timetable for ourselves. Indeed, ma'am. Thank you so much, Astha, ma'am. You're talking about time management. I would like to put this question to Asha Jayan, ma'am. Ma'am, do you think people deliberately fall into this cycle of procrastination, and then when time chala jata hai hamare haath se, pata chal jata hai ki nahi ho paega, only then we realize that it's time we should get things done. Ma'am, what do you think about it? To a certain extent, yes. Because whenever we talk about procrastination, हम उसको generally associate करते हैं with time. But when you look deeper into it, you'll see how it is related to your mood and how you're perceiving the given task or yourself. Right? So जब अगर मुझे कोई चीज present करनी है and I am thinking this is some very big forum and यहाँ पे तो मेरे को तो I have to मचाओ तूफान here, then I will start delaying, because then kahin na kahin the task has become very big, right? It's basically like अगर मैं आपको एक बड़ी सी थाली दे दूं, खाना देखते ही आपको लगेगा यार इसको कैसे खाएंगे, right? Then you will start delaying, धीरे 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 करके. So deliberately होता है अगर आप perceive कर रहे हो उसको something as something major, something that you cannot digest, something you cannot take it. So yes, that time it is deliberate, but yes, most of the time it becomes your habit. Unless if you're not aware of it, it becomes your habit. And when it becomes your habit, then you're not deliberately doing it. You're just doing it because you are in tune with, or you have no control over your actions. Right. That's right, ma'am. And we'll talk more about it in a deeper level as well. But talking about awareness, what came to my mind is it really, I mean, it is obviously, but how important it is? His question is for Devika, ma'am, actually. So, ma'am, would you like to tell me how important is bringing in awareness about managing procrastination? Because there are lots of people who don't know that these things can be managed easily with proper guidance. So, ma'am, would you like to shed light on it? Yeah, procrastination is something which, as other speakers also said, that it is not just a deliberate attempt. Times it turns into your habit and you're not able to control what you are doing. So, yeah, procrastination is something जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, और सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारे प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे what are the factors which are promoting our procrastination. And once we identify it, it's important to take steps towards improvement. The very moment you identify what are the reasons behind your procrastination, the very moment you should start taking some steps to improve the positive direction, right? So it is not always that the subject is responsible for it. At times the environment is also. So we need to be in tune with both these things, and then we can do something good with this. So that's right, ma'am.
And I think there are lots of people who do not realize these things. And I think today we have the perfect platform to discuss all these things and bring in more awareness. I think that will be the best thing that we could carry away at the end of this session. So, ma'am, there is another question. I think Miss Astha can answer it, and maybe both of you can add to it, or likewise, that there are many psychological studies that often associate procrastination with reduced mental health, like higher level of stress, for instance, or lower level of well-being. So, ma'am, any opinion on this? Of course. So there are many studies. और बढ़ जाएगा, right? So in itself, it's such a layman thing that you are yourself burdening your own self with so much of work in your hand. So if the task that was supposed to be finished today, now what happens is, like we all do work, right? On the spot हमारे पास कुछ आ गया. What we fail in doing is priority setting. What is important versus what is urgent versus what is very, very important. If we can just enlist things and divide things in such a way, I think many things could be sorted. Okay. अब आज का काम अगर आज नहीं हुआ, like suppose I joined 5 minutes late, you made me a call, right? Now this has triggered my anxiety. Oh my God, I'm late. The other panelists have already, logged in. I am late. So this triggers the anxiety. With anxiety, a lot of stress and a lot of other things are also damaged. हमारी personality change हो जाती है. लोग हमें perceive गलत तरीके से करने लग जाते हैं. Maybe somebody could perceive the students as, ये तो हमेशा ही late assignment submit करता है. But back end, we don't know that how is the child able to actually submit the assignment or do the project or come upfront and answer the question or discuss the problem. So this procrastination in itself, I still remember this thing. Procrastination की जैसे procrastinare एक Latin है, इसी तरीके से एक डॉक्टर स्टील हैं, उन्होंने बोला था कि procrastination means how to stop putting your things off and getting your stuff done basically. आप कैसे उस चीज को अवॉइड करते हो और कैसे काम करवाते हो. अगर आप देखो, जो बच्चा अपने एक टास्क को इतना ज्यादा अवॉइड कर पाया है, वो हाईली क्रिएटिव भी हो सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि 4 दिन में जो असाइनमेंट करना था वो एक रात में कैसे खत्म करना है. The child could be creative as well, but that is again a burden on the child to be that creative, or genuinely can also be creative. So yes, अगर हम mental health की बात करें तो mental health में साइड भी है कि वो creative हो सकता है, बट नेगेटिव भी है कि हम डिप्रेस्ड हो सकते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, हमें एंजाइटी हो सकती है. हम देखते हैं आजकल बच्चों को छोटे छोटे मिड टर्म के एग्जाम्स लेते हैं तो एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं किया होता और वो घबराहट की these marks are going to count and everything is counting now and marks are everything and there is a lot of societal pressure, parental pressure. Hence, because of this procrastination, the habit which you easily overcome with a smallest of self-awareness that the task given should be completed in a stipulated time period. If you are not able to manage, talk to somebody and get your time managed. And hence, yes, of course, anxiety and a lot of personality issues do crop in with all these things. Yes, I think, and I also believe so many mental health concerns, it's related to procrastination in some way or the other. So I think it's very important to talk about those things as well. But yes, because we already started talking about youth and how they procrastinate, let me take this opportunity to put on this question as well, that what happens is we have seen that both internet multitasking that we commonly call and insufficiently controlled internet usage, both this amplify the negative mental health implications that we know frequently has been associated with procrastination. So both these things go hand in hand. So Ms. Devika, would you like to tell more about this? Do you think internet is also playing its role in the procrastination when it comes to youth especially? Definitely, it is.
जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करने बैठते हैं, पहले तो वी हैड पेपर्स इन आवर हैंड्स. You know, a few years back, all of us were fond of reading books, but now we have internet. We go Google it and we find solution for any and every topic, whatever we have in hand. और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, there are n number of pop-ups which are disturbing us every now and then. और हम में से कितने लोग, जितने भी लोग इस पैनल में हैं, हम तीनों और बाकी जितने भी और भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, हम में से कितने ही लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं उसी एक्टिविटी पे जिसके लिए हमने उसको यूज किया है. All of us present here are adults. We are not in the adolescent or the youth group. But then हम अपने आप को resist नहीं कर पाते, looking onto the ad of the sandal, ad of the bag, ad of the groceries, etc. etc. तो बच्चे जिन्हें बहुत सारे नेटफ्लिक्स के एड्स आ रहे हैं और भी बहुत सारी शॉपिंग के एड्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजों के एड्स आ रहे हैं, वो अपने आप को कैसे स्टॉप कर पाएंगे? On one to another and wasting their time. So leading towards how can we manage all these things? So I would rather say that we should start, identifying what is our priority, jotting down all the priority lists. जैसे भी जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है जिसकी number 1, number 2 ऐसे करके we can jot everything down and then we can make short term goals. See, using internet is not bad, but using it to a in excessive, anything which we are using in excession is bad, right? So जब भी हम internet use करें, we should always see that we should have a control over the time. अगर हमने एक टॉपिक भी सर्च करना है, बच्चों को अगर कोई टॉपिक भी सर्च करना है, अगर वो पेरेंट्स गाइडेंस के अंडर कर रहे हैं या वो अकेले कर रहे हैं, उन्हें एक टाइम लिमिट देनी चाहिए खुद को या पेरेंट्स को, बच्चों को वो टाइम लिमिट देनी चाहिए that okay, you have 10 minutes, you can search for that topic and then you can do your brainstorming, jot it down and get a solution for your question, rather than lingering around in the internet and एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से तीसरे टॉपिक पे हम जाते रहे और अपना टाइम वेस्ट करते हैं. Multiple steps we can follow for the same, right? So I would like to add on. Sure, ma'am, sure. I also feel like when you when I look back at my youth or when I was in school, I see how my entire day was very scheduled, very structured, right? Then that gives more your mind to procrastinate or get into things like that where you want something out of your structure. It's very structured, your timetable, this is very aaj ye karenge. You go to school is also exactly the same. Is period se is period tak ye, then this. So then it gives you more, and when you're in that age, your mind is very chanchal. Like you would want to do things which are said no to you specifically. Right? So also the structure. So I feel it's important for parents and teachers to realize that youth also needs some time in their hands so that they realize their own time. They know what to do in their own time. Not everything has to be told to them. ये करो कि ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद वो करो. So that free time also has to be a part of their daily life, wherein they give some relaxation to their mind. Yes, absolutely. This was what I meant by short-term goals. अगर आपको पता है कि 5 घंटे में बैठ के पढ़ना है, तो 5 घंटे पढ़ना है सोच के, this is so huge, right? So what you can do is you can plan for 20 minutes, 5 मिनट की fun time आपका, और then again 20 minutes. So this way you can, break your long hours of studying, the monotonous studying, I should rather say. Absolutely. Yes, I think both the things that I could carry away, like identifying the priorities and setting up short-term goals is very important in this case. And yes, I believe all those who are listening to us today are jotting these important points down because I am doing my part. So anyway, talking about students that just now Asha ma'am has told कि कभी-कभी क्या होता है कि attention में थोड़ा deficit होता है, and here people they just say people what they do is they commonly link procrastination with attention deficit.
and many a times to ADHD also, that is attention deficit hyperactivity disorder also, and other mental health concerns along with it. So as teachers and parents, how important it is for us to understand कि procrastination or attention deficit no related है या नहीं है, or how to distinguish both these things, or how to connect both these things and identify it in a student. So ma'am, would you like to tell about this? See, if I see overall, you take up any mental disorder and you will see some of the other factors linking to some of the other things. So in general, in totality, when you talk about mental health, it's some kind of deficit that is happening in you, which is normal or which is not normal from the population, right? If we link it, again, structurizing it, I don't think so will help it too much, because when you structure, if I say, okay, ye problem hai, ye cheeze hi hai, then you always look for those things. If I talk about depression, if you say कि depression में mood low है, ये low है, वो low है, you're irritable, you're angry, you don't get enough sleep. Now there could be other factors also. Sometimes anxiety is triggering your depression. Okay, so what I'm trying to say is, relating it, I'm not sure will help, but yes, for parents to understand, it's a very long process also, because they have to also understand themselves. The more they will be aware about themselves, the better awareness they can bring into their children, and what is normal, what is not normal, they can define. Yeah. If I, let's say, if in my youth, I would be not planning or just be in the moment. Now suddenly I've become an adult, and now I'm planning, I'm very thorough, I'm doing everything like structured and everything. And now I'm expecting why my child is not doing this, right? So if my awareness is there that, okay, when I was a youth, when I was in college, when I was in school, I was the same, right? So I may not put that extra burden on my child or expectation on my child that, okay, आपको यही करना है या ऐसे करो क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ. So awareness for parents to have about themselves will help bring up their kids in a very holistic manner, I feel, or improve their mental health. हम भूल जाते हैं हम कैसे थे बचपन में. We all are the same. If I may add to this. Yes, sure, Astha ma'am. So one must always understand, एक circuit होता है, एक pattern है, जिसे हम साइकोलॉजी की टर्म्स में कहते हैं एमिगडाला हाईजैक. होता क्या है, हमने कोई टास्क को पुट ऑफ किया, उसकी वजह से हमें एक सेंस ऑफ एंजाइटी आई, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है. उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से जो हमारा एमिगडाला है, जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, जो हमारे जितने भी थ्रेट्स होते हैं हमारी लाइफ के, कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, एक डर लगता है कि वो किया तो वो क्या कहेंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अगर नंबर कम आए तो पेरेंट्स डांटेंगे, ऑल दीज काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज दैट वी हैव, वो डेंजर साइंस एमिगडाला जगा देता है. इट्स अ डिटेक्टर. सो जहां वो थ्रेट डिटेक्ट होता है, वो जो एक उससे क्या होता है, एक जेन्युइन थ्रेट परसीव करने लग जाती है हमारी बॉडी. अभी तक हम सिर्फ थ्रेट को थ्रेट नहीं समझ रहे थे, पर अब क्योंकि एमिगडाला में वो रजिस्टर हो गया है रिस्पॉन्स, अब उसको हम जेन्युइन थ्रेट समझने लग गए हैं. और जेन्युइन थ्रेट समझने की वजह से जो हमारी एक्चुअल सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो नीचे चला जाता है. एंड सारे मेंटल डिसऑर्डर्स वहीं पे क्रॉप इन होने शुरू हो जाते हैं. अब हम एंशियस भी होंगे, अब हम सस्पिशियस भी होंगे. अच्छा, उसने तो कर लिया होगा, कहा तो यही था कि एक ही चैप्टर पढ़ा है, पर देख उसने उसको सामने तो वो वाला सेकंड टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया. एंड वहां से हमारी, क्योंकि इनसिक्योर हम हो रहे हैं, सामने वाला इनसिक्योर नहीं है, वो अपने मैनेज कर रहा है टाइम और अच्छे से पढ़ रहा है. बट यहाँ पर वो भी लाई करता है आपका स्टीवन कोवी का 9-10 प्रिंसिपल. 10% सिर्फ होता है जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारे 90% के कॉन्फिडेंस को या हमारे 90% की रूटीन को खराब कर देता है. दिस 10% इज, हेलो यार, कल के पेपर के लिए तूने कोई पढ़ाई करी है? हाँ यार, मैंने पहले 2 चैप्टर कर लिए. बस ये लाइन ना बोली होती तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे थे, हम भी अपना पढ़ रहे थे, पर हमें ना तो किसी और को बताना है कि हम पढ़ रहे थे, ना ही किसी और से ये सुनना था कि तेरा पेपर कैसा गया,
हमें नहीं सुनना था, ये अमेगडाला नहीं लेना चाहता है हमारे ब्रेन का पार्ट, इतना थ्रेट डिटेक्ट नहीं करना चाहता है, बट हम करते हैं एंड हेंस वहां से इनसिक्योरिटी आ जाती है, हेंस वहां से एंजाइटी आ जाती है, लो मूड होता है और सबसे पहला थॉट आता है आई एम वर्थलेस, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अभी 2 ही चैप्टर हुए, उसका तो 3 हो गया, वो तो मुझसे ज्यादा निकम्मा था. एंड दैट इज वेयर this part of the brain is hijacked and we feel low and we feel lazy and we feel हमारे तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की लग गई, आज कुछ नहीं कर सकते अब हम कितना भी. फिर हम दोबारा एक पेपर उठाते हैं और पेन उठाते हैं और लिखते हैं 9 to 10 मैं ये करूंगा, 10 to 1 मैं ये करूंगा, बीच में मैं ये ब्रेक लूंगा, रिविजन मैं तब करूंगा. आधा घंटा हम उसमें वेस्ट करते हैं और फिर रियलाइज होता है 9 to 10 का तो टाइम टेबल बनाने में ही चला गया. सो दिस इज अ सर्किट पूरा जिसमें हम घुस जाते हैं और सारी मेंटल इलनेसेस को हम खुद इनवाइट कर लेते हैं अननोइंगली. और इस सर्किट को ही ब्रेक करना है जहां हमें ये अवेयरनेस आ जाए, जैसा कि आशा मैम ने भी बहुत राइटली पॉइंट किया. हम एज पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि जब हम 17 के थे तो हम क्या करते थे. अब हमें लगता है कि यार हमने तब गलत किया, पर हम अपने बच्चों को तो सुधार सकते हैं. पर बच्चों की भी तो वही उम्र है कि वो भी बाद में जाके ये कहें कि यार हमने उस टाइम गलत किया था. तो बच्चों को बचपन जीने दें. हम बच्चों को बचपन में ही बड़ा कर देते हैं और वही सारी कहानी उल्टी हो जाती है. फिर जब हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उनसे तो हम फिर बच्चों को यही कहते हैं यार तुम उम्र से पहले बड़े हो गए, अब तुम हमारे बाप बनोगे, अब तुम हमें सिखाओगे. जब जब चाहते हो वो करें तब हम एक्सपेक्टेशंस हमारी अलग होती हैं. एंड दैट इज वेयर हम धीरे 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 करके बच्चों को इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि उनको ये लगने लग जाता है कि उनको करना नहीं है, उनको सिर्फ कहा गया है, चाहे वो टीचर्स के थ्रू हो चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो. everyone knows because हमारे यहाँ पैटर्न क्या है as adults also we give deadlines but in our brain there is a second deadline existing. बेटा 20 तारीख को असाइनमेंट सबमिट करना है, अंदर अंदर पता होता है 20 को कोई नहीं करेगा तो 22 तक तो हम 22nd इज द एक्चुअल डेडलाइन, 20 को बोलेंगे तो आने शुरू होंगे. अगर ये हमारा ही थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, पेरेंट्स अगर रिजिड हो जाए कि बच्चा इस टाइम से इस टाइम पे टीवी कोई बात नहीं, आज थोड़ा लेट आया था, 5 मिनट फालतू लेट आया था, इज देयर प्रॉब्लम. टाइम इज फिक्स्ड, टाइम इज लिमिटेड. आप टाइम को फ्लेक्सिबल रखें बट इतना फ्लेक्सिबल ना रखें कि वो एक नेगेटिव हैबिट बन जाए आपकी. Yes, that is what I wanted to add. Thank you so much, ma'am, for adding this. And I think these are practical things that we face in everyday life. And I'm sure people are being able to relate to all these things, whatever Miss Asha has added, whatever Miss Asta has added. I think मेरे साथ तो ये होता है. I have witnessed all these things. So I believe all the attendees, most of them, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा. And we have started receiving live questions as well. We will take them in a while. But before that, I would also like to ask another question, and that says, no, ठीक है, हम short term, मतलब जो कभी-कभी procrastinate करते हैं, that is okay. We have already talked about it. But sometimes what happens is there is a long time procrastinator. If there is, we are calling him or her a long term procrastinator. And what happens is breaking the habit may require a little extra support in those cases. So in this case, how do you think teachers or families can provide this support? Miss Asha, would you like to join, and then maybe Miss Asta can also add her ideas? Sure. So when we you correctly said, there is acute procrastination and there is chronic. Chronic मतलब जहाँ पे आप long term procrastinate कर रहे हैं and you become a serial procrastinator, right? So definitely serial procrastinator will take more time to break his habits because it has become a lifestyle. Right. Because it develops over time and आप aware नहीं रहते हो, it becomes very automatic and then it becomes your lifestyle. Now to break this, yes, parents and teachers will definitely require a lot of tolerance. Yeah, and a lot of patience. That is the support they can provide, definitely, and a lot of positive encouragement for sure. But for a person who is in this loop, जो इसमें है, थोड़ा लंबा काम करना पड़ता है, because it also breaks you. It's like how a dirty habit becomes a part of you. So it breaks a lot of good things inside you. Yeah, because you are a part of that dirty habit. Okay.
सो वैसे ही जब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि वी स्टॉप वैल्यूइंग आवरसेल्व्स. मैंने बोला था मैं 5 बजे तक कर लूंगी, ठीक है, बट नहीं हुआ, बिकॉज ठीक है मेरे को पता है, मैं आई एम ऑल्सो लिविंग अ डुअल लाइफ वेयर मेरे को पता है कि मैं 5 बजे नहीं 6 बजे तक तो करके दे ही दूंगी, ठीक है. तो 5 बजे नहीं हुआ, 6 बजे नहीं हुआ, मैंने सोचा चल यार कुछ नहीं होता, 7 बजे कर दूंगी, 7 बजे तो कर ही दूंगी, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स व्हेन यू से एक्यूट. अब ये क्रॉनिक बन जाता है, क्रॉनिक बनता है तो फिर 5 का 7, और मुझे पता है मैं लास्ट मिनट करती हूँ, और ये लास्ट मिनट से व्हेन आई क्रॉस दैट ब्रिज एंड जंप टू द अदर साइड जहां पे होता ही नहीं है, दैट इज समथिंग वी डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ, ठीक है. तो वहां से मैं जंप करके उस तरफ चली गई. अब पहले मैं क्या करती थी, मैंने बोला है मैं 6 बजे तक करूंगी और मैंने अपने दिमाग में सेट किया कि मैं 6 बजे तक करूंगी, पर हो जाता था, बट अब वो नहीं हो रहा है बिकॉज आई एम इन अ लूप. सो समवेयर क्या होता है, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ ऑल्सो. मेरे को अपनी भी वैल्यू नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ इट इज इमटेरियल. I have stopped listening to myself. Forget what others are saying. I have stopped listening completely to myself. So there is that loss of self also, which is a very big loss. And when that loss happens, you kind of you don't have anything to hold on to. When you lose yourself from within, like I don't know. So us time mein we need to do some time assertiveness training so that we become more vocal. And also when I become vocal, I also hear myself and follow what I'm saying in my head or what I've set for myself. Okay, that is one thing that we'll have to do, or a person who is in a chronic state can do, that they can do some self finding or some assertiveness training. Okay, another thing, a change in lifestyle, because procrastination also any kind of chronic problems also deals with your lifestyle. कोई भी चीज क्रॉनिक हो वो हमारे लाइफस्टाइल को जरूर इफेक्ट करती है. सो दिस प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर लाइफस्टाइल, और इट कैन बी द रिवर्स. आवर लाइफस्टाइल इज becoming a cause for our procrastination. I'm not eating good, I'm not exercising, I'm not sleeping well, I don't have enough energy to complete tasks. Yeah. So that is one thing that I have to identify why this is happening. And if this is happening due to any lifestyle problem, then I can go back and rectify that. Yeah. And apart from these two, keeping or setting realistic goals. Yeah, that's another thing why we procrastinate. When we don't have realistic goals in our life. I want to go to the moon, but I don't know how will I go, what means do I have, what modes. The practicality is gone. Okay, so setting realistic goals is very, very important. Goals and expectations. What are you expecting from yourself and from others as well? So I think once you do take care of these three, there are more things, but I think this is the priority, or this is what I feel. If you can start working with, then you can definitely overcome some part of procrastination. All right, ma'am. Astha ma'am, would you like to add on this? Yeah, just continuing with the Asha ma'am's point, I would say that, because we are very concised with the age group, which is teens. टीन्स के साथ जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं, इफ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग रिलेटेड टू completing your assignments, making your study plans, revising, reading, or something related to do which has something to do with your studies, make sure that you limit your distractions. So suppose अगर आप पढ़ने बैठे हैं 1 घंटे के लिए, that is not the right target. Sit for 40 minutes. That is a realistic target, because thousands and thousands of studies say कि आप 1 घंटे का टाइम स्पैन लेके नहीं बैठ सकते, आपका अटेंशन स्पैन नहीं होता इतना. सो वो जेन्युइन नहीं है. ये लोग जो कहते हैं ना, मैं 5-5 घंटे बैठ के हम IAS की तैयारी करते हैं और इतने घंटे स्ट्रेच में बैठते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो मेमोरी स्पैन होता है, जो रिटेंशन स्पैन होता है, वो कम हो जाता है. Unless I'm not saying sabka, unless you actually have some very imaginative, creative, beautiful techniques to learn.
Like I always tell, कुछ स्कूल के बच्चों को मैं हमेशा जब पढ़ा रही होती हूँ, so there are certain techniques that we use जिससे पढ़ाई को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, आप बोरिंग नहीं रहने देते. हम अक्सर कहते हैं हम स्टेट्स और कैपिटल्स याद करते हैं. सो अगर आपके पास एक स्टेट है कि हमें ये याद करना है कि कोल जो एक चीज है वो रानीगंज में पाई जाती है, अब हमें इस चीज को याद करना है. हमारे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में हम ये सब पढ़ते हैं, ये राजा यहाँ का राजा था, ये इसने यहाँ रूल किया, इस ईयर में ये हुआ. सो कई बार हम चीजों को रिलेट करते हैं बट हम भूल जाते हैं. स्टेट्स कैपिटल्स याद करनी होती है, हम भूल जाते हैं. सो हाउ आई मेक चिल्ड्रन लर्न दिस इज, रानी मुखर्जी के सिर पे कोल गिरने से वो गंजी हो गई. रानीगंज इज फाउंड इन, रानीगंज में कोल पाया जाता है. Just an example, but to tell that academics can actually be very interesting. अगर आप इस तरीके से चीजों को रिलेट करेंगे, आप इस तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल खत्म कर देंगे अपनी लाइफ से, और आपको और मन करेगा कि यार इस 45 मिनट्स में मुझे एटलीस्ट एक चैप्टर करना है. हम बहुत ही ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. आज भी हम बुक से पढ़ रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, फिर अंडरलाइन वाली चीजों को नोट्स में लिख रहे हैं कि लिख के शायद ज्यादा याद होता है. बट आई वुड सजेस्ट माइंड मैप्स, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, माइंड मैप्स को यूज कीजिए. एक ही पेज में आप अपनी पूरी बुक को समराइज कर सकते हैं. दिस इज हाउ ब्यूटीफुल माइंड मैप्स आर. सो यू कैन गूगल, आप अपना एक टॉपिक उठाओ, इवेपोरेशन उठाओ, 7वीं क्लास के बच्चे, आप कोई मर्जी टॉपिक उठाओ, आप एल्गोरिथम भी उठा लो, आपको इतने ब्यूटीफुल माइंड मैप्स बने हुए मिलेंगे. आप उनसे सीखें कि माइंड मैप्स कैसे बनते हैं, देन अपने नोट्स के हिसाब से अपने माइंड मैप्स बनाएं. दिस इज अबाउट हाउ यू कैन क्रिएटिवली वर्क. एंड जब आपका इंटरेस्ट आएगा, आप हाई कमिटमेंट को छोड़ के एक्चुअल कमिटमेंट पे आओगे, आपकी एंजाइटीज कम होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब आप एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में जितना चाहते थे उतना अचीव कर पा रहे हो. That is going to give you a confidence, a hit, a boost कि आप आगे आने वाले टाइम में और कुछ कर सकते हो. और आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को लिमिटेड रखो. अगर आपको पता है आपको 40 मिनट पढ़ना है, तो एटलीस्ट उस 40 मिनट के लिए नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक. आपका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने किसी तरह का कोई डोर, कोई विंडो नहीं है. अगर विंडो है तो आज ही जाके उस पर न्यूज़पेपर चिपका दीजिए, ताकि आपको थ्रू नहीं दिख रहा है कि हवा चल रही है, ओ माय गॉड, बारिश हो रही है, ओ माय गॉड, अच्छा मम्मी खाना बना के लेके जा रही है, बस 5 मिनट में खाने के लिए आवाज आने वाली है, क्या ही पढ़ना है, राइट? सो व्हेन देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, देन you tend to come in the spectrum of boredom, and that boredom further leads to procrastination. तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं. यहाँ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है जो आई थिंक ब्रूअर ने दिया था, जिसे हम BBO कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बिगर बेटर ऑफर. अगर आप अपने आप को एक बेटर रिवॉर्ड दो देन अवॉइडेंस, अवॉइड नहीं करना है इस चीज को, बट अगर इस चीज को टाइम पे कर लिया, सो यू आर गिविंग अ बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, अ बेटर ऑफर टू योर ओन सेल्फ in order to complete this task rather than avoid this task and later on creating more anxieties and और टालो, आखिरी में करना तो वो आपको ही है. सो जब करना आपको है, आज नहीं 10 दिन बाद करना है, तो आज ही क्यों नहीं कर लेते? सो the earlier the better it is. Definitely. I think this conversation is also getting very interesting because as I'm slowly relating to my daily activities and how I procrastinate, I feel I have been finding the solutions dhire, and that's becoming a very fruitful conversations, I guess. So thank you so much for that. Now let's get some live questions from the audience as well, from the attendees. So the first question is from Achala Tripathi. Miss Achala Tripathi, would you like to unmute yourself and put forward your question? Miss Achala Tripathi, you have to unmute yourself to ask the question. Or we can also have Nachiket Desai. I hope I'm pronouncing your name right. Miss Nachiket, Mr. Nachiket, would you like to unmute yourself and put forward your question? I have just allowed you to yes, to speak. Hello. Yes, you can put forward your question, Mr. Nachiket.
Hi, Nachiket here. So my question was, can having OCD help in not procrastinating? Mr. Nachiket, would you please not mind and ask, be a little louder, if you don't mind? Sure. My question was, can having OCD help in not procrastinating? I think that is a very interesting question to answer. Asha ma'am, would you like to go ahead or? Nachiket, I feel procrastination is much easier to deal with than dealing with OCD. Exactly. So don't wish for having OCD to deal with procrastination. And My it'll not views help. on this is like I have OCD and I want to complete all of my tasks in a stipulated time as I want them to be, and each and everything needs to go in time and in place and as it is supposed to be there. I need everything as it is supposed to be there and not have them to be delayed or to be done before itself. And no, as it is defined, I need them to be done in that way only. So when I deal with my colleagues in my office, like and when I ask them why was this task not done and all, they tend to give some reasons which make me uneasy. Like my mindset is not like them, and I cannot understand them in completely, like why the task wasn't done. So those reasons make me feel that okay, they are not focused in their work and such. So this was it. I can completely understand where you're coming from. And since you are so open about having this problem or this issue, I can understand how difficult it is for you to maybe accept why there is a complacency in work or why this is happening. Because like OCD is, it wants all the control. It wants everything to be, yes, I want full control over things. So when other people's are involved in working in your life, it can become a little difficult. Dealing with that can become a little difficult. So I still don't feel having OCD or being OCD will help procrastinate. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Nachiket, for your question. Up next, we have another question. That is from Yasmin Jan. Yasmin, yeah, if you could have Yasmin unmute herself. Yes, Yasmin, you have been allowed to speak. Please move forward. Good evening, ma'am. Ji, Yasmin, yes. Ma'am, myself Yasmin Jan. I am from J&K State. I have done masters in psychology. Presently, I am working in GMC Jammu. Ma'am, I have a question, please. जब आपने कहा कि बच्चे हैं डील देना चाहिए and all that means कि I mean to say it should be balanced और क्या होना चाहिए मतलब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपका यास्मीन, एक बार फिर से पूछिए। मैम जब आपने बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने खुद वो लाइफ जी है जब व्हेन वी आर 16 और 17 तो फिर हम उस लाइफ में जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उन पे ज्यादा मतलब करते हैं स्ट्रिक्टनेस करते हैं तो हमें ये रियलाइज नहीं होता है तब कि हम भी तो उस स्टेज से गुजरे हैं। मैम उस सिचुएशन फिर हम क्या करेंगे वहां पे हमें ज्यादा मतलब इट शुड बी बैलेंस्ड आर ओवर प्रोटेक्टेड आर अंडर प्रोटेक्टेड दैट्स व्हाई आई मीन। सो देखिए कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस करके ही सीखी जाती हैं। yes, हर चीज आप ऐसा नहीं, ABCD तो आपने भी सीखी, फिर बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं? यस मैम राइट, आपको पता है जब तक वो ABCD नहीं सीखेगा तब तक वो वर्ड नहीं बनाएगा तो सेंटेंस नहीं बनाएगा। दैट इज हाउ वी ग्रो। सीधा ही बच्चे को खड़ा कर देते, एक एक कदम क्यों चलाया?
जी मैम, exactly. हमें पता है वो जब तक गिरेगा नहीं तब तक बैलेंस बनाना नहीं सीखेगा, तो हम फिर भी गिरने नहीं देते, हम सिक्योर हो जाते हैं कि हाय गिर ना जाए, हाय चोट ना लग जाए। Yes मैम. और यही काम हम बड़े होते तक उसके साथ करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि बच्चा हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि Yes. हर डिसीजन लेने से पहले वो 4 बार पूछता है अपने पेरेंट्स से कि मैंने ये सही किया है कि नहीं किया। तो कई Exactly, जिंदगी ma'am, में exactly. एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, कई जिंदगी में सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हमें बच्चों को इतना फ्रीडम तो देना चाहिए कि वो उस चीज को एक्सपीरियंस करें। Yes मैम. टाइम मैम हमें exactly, हमें मतलब, बच्चों को गाइड जरूर करना है कि yes देखो मैम. ये चीज है, जब हमने की थी तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, तुम कॉन्सिक्वेंसेस को जज करो पर करोगे खुद, और हर कॉन्सिक्वेंस की जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की होगी। विद दिस डिस्क्लेमर you can surrender everything to your child and trust me, the children are not going to take extra leverage of this. Yes अगर मैम. उनको इतनी सहमति से, इतने प्यार से बिठाकर समझाया गया हो और उनको ये तसल्ली से बताया गया हो कि this is it, this is the plus, this is the minus, Minus. now you evaluate and whatever you do is your life. Yes मैम. प्लस माइनस आपने भी अपनी लाइफ में किए, आपको भी समझाया गया था। जितने रिसोर्सेज आपके पास थे उस हिसाब से आप समझे, जितने रिसोर्सेज उनके पास है उस हिसाब से वो समझेंगे। Accordingly, yes ma'am. Exactly. That means ma'am, we should give time to Yes, explore of the course. things. Yes बिल्कुल, ma'am. जितना ज्यादा एक्सपोजर उनको खुद करके आएगा उतना कभी भी वो आपकी बात समझ कर नहीं समझ पाएंगे। Thank you so much ma'am. Thank you. Pleasure, ma'am. Thank you so much for that wonderful question. And now we have another question. This is from Miss Achala. Miss Achala, can you hear us, or are you being able to unmute yourself? Okay, in that case, I'll read out her question. So Miss Anchala had this question that says how to control careless attitude in behavior and everyday life. I think this is in terms of procrastination that we have been talking about. So how to control our carelessness? Miss Asha, would you like to talk about this? Okay. So I think careless, what I'm thinking is if I am careless, that means somebody else is being more careful for me. Yeah. So the moment you delete that person or that action of someone else being more careful for me, I will start becoming more careful about my things. So I think that is how, if you're asking, I don't know in what context you're asking. So if you're asking in terms of if your child is being a little careless, then maybe you as a mother or you as a caretaker can step back, let the child handle things on his own for some time. That way, he'll become a little more careful about things, his own things. Okay. Also, carelessness can come from the fact that I know even if I lose this, I know I'll get more. True. Yeah. So if I know I have a Pandora's box and I can take out, मेरे को जो पसंद है मैं ले सकता हूँ, मेरे को जो पसंद है मुझे मिलेगा, that attitude can make you a little careless. Yeah. So if you can change these things, maybe things can improve. Okay, ma'am, I think that is very important for us to realize and work on it. But yeah, if I'm allowed, sure, ma'am. Add one or two more points. I would say that before understanding that this is a careless attitude, understand why is this a careless attitude. Because अगर मैं careless हूँ तो शायद मुझे नहीं पता होगा कि मैं careless हूँ, मुझे कोई और बता रहा होगा. Some observer must be telling me that this kind of attitude is careless. I would not deliberately be a careless person, considering that मेरे को मेरी image का बहुत teenage की अगर हम बात करें तो teenage में सब बच्चे अपनी image को लेकर बहुत conscious होते हैं. तो सबसे पहली चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि how do I function and what appears to be careless to others. Then accept that this is your weakness. This is very very important. Acceptance किसी teenage में नहीं आएगी because हमारा एड्रिनल रश इतना ज्यादा हाई होता है, हमारी ईगो बहुत ज्यादा हाई होती है कि मैं गलत नहीं हो सकता, दुनिया गलत हो सकती है, पेरेंट्स गलत हो सकते हैं, टीचर्स गलत हो सकती हैं, बट मुझे पता है मैं अपडेटेड हूँ, मेरे दोस्त ने बोला है नहीं हो सकता तो मैं नहीं हो सकता केयरलेस.
So जब तक ये acceptance नहीं आएगी that you know some things there can be some flaws and I accept those flaws and wholeheartedly I accept it and I would wish to work on them, I think the change cannot happen. And when I talk of this change, I think ये change word दूसरों के लिए नहीं आना चाहिए, उस acceptance वाले खुद के अंदर आना चाहिए. Change for your own good, don't change to show somebody, to prove somebody, because ये teenage एक ऐसा age group है जहां ये देखा गया है कि हमारी एक जिद बन जाती है नो, XYZ फ्रेंड को दिखाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा बन के दिखाना है, अपने पेरेंट्स को ऐसा बन के दिखाना है, और हम उस रैट रेस में इतना लंबा खिंच जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या थे, हमें करना क्या था, हमारी लाइफ का हमने गोल क्या बनाया था. बस हम इसी में रह जाते हैं कि यू नो वी वांटेड टू बी लाइक दिस बिकॉज एक्स वांटेड टू सी मी लाइक दिस. सेम गोज विद द करियर. तो इसीलिए वो केयरलेस एटीट्यूड क्यों है, अगर वो समझ आ जाए तो ये सारे जो बाद के नेगेटिव एक्शंस हम ले लेते हैं अपनी लाइफ के, वो कहीं ना कहीं लेने से बच जाएंगे. सो अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, दैट्स द ग्राउंड रूल. Definitely, ma'am. It is, as we know, as you spoke about it, it's really important for us to understand, and उसके बाद ही हम self acceptance कर पाएंगे, and then we can only start working on it, I believe. So we have this next question also. It is from Prerna Gupta. Can we please unmute Prerna and hear what she has to ask us? Am I audible, ma'am? Yes, Prerna, you are. Please ask your question. Ma'am, Prerna, where are you? I have a 12 years old son. So Okay. most of the time he's busy in playing, or like, as you know, nowadays video game is also a habit. Although as a mother, I know his potential. Like he is able to do things, especially academics, very nicely or in a better way. But nowadays he's being so careless, whether it's his exam also, he's not ready to revise or learn anything. So I feel like most of the time during the day I'm rushing behind him and he is not ready. When I force him to study, at times he opens the book and just sits. So kindly tell me a solution for this. I think this is a very serious question, and many moms would like to know this answer, because I think बहुत moms के साथ ऐसा होता है. So any of the panelists, if you would want to answer this. Okay. It's gonna be a little difficult for you, ma'am. But आपको धीरे-धीरे करके ना responsibility उस पे डालनी शुरू करनी पड़ेगी, so that he becomes responsible for his own actions. क्योंकि आप अभी कर पाएंगे, उसके पीछे भाग सकते हैं, but हाँ, if this has been behavior, or if this has been a pattern, then आपको ये pattern break करना चालू करना पड़ेगा. तो you as a mother, or we all as parents, I can understand वो जो anxiety होती है हमारे अंदर, for our child to succeed, for our child to do the best, give the best and get life में सबसे best चीज, सब best के पीछे ही हम बहुत ज्यादा भागने लग जाते हैं. वो चीज थोड़ा सा हमको भी, like I said, set realistic expectations and set realistic goals in your life as well. What is best for you, you define आपके हिसाब से, नॉट बिकॉज वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पड़ोसी घर में क्या चल रहा है, रिश्तेदारों के घर में क्या चल रहा है, राइट? सो नॉट बेस्ड ऑन दैट, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी कैपेबिलिटी एंड आपके बच्चे की कैपेबिलिटी, है ना. एंड इस प्रॉब्लम को अभी इमीडिएट सॉल्व तो एकदम मुश्किल है, क्योंकि ये एज भी ऐसी है जहाँ पे चाइल्ड स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल ऑटोनॉमस. तो उस ऑटोनॉमी में वो डिटेस्ट करते हैं पेरेंट्स को, बिकॉज दे वांट टू हैव देयर इंडिविजुअलिटी, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर देम. इसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज जब तक वो फ्रिक्शन नहीं होगा वो इंडिविजुअलिटी भी नहीं होगी, राइट? सो आप जितना शायद उसके पीछे पड़ेंगी उतना शायद उस चीज से भागेगा, ठीक है? सो आप पहले शांत, काम डाउन होइए, ठीक है, कुछ नहीं होगा, उसको भी पता है हाउ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स आर, ठीक है, ये इतना सेंस तो उसमें भी है, ठीक है. जस्ट गिव इट सम टाइम, आप शांत हो जाइए, थोड़ा टाइम मत इस चीज के पीछे पड़िए. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो.
True. So I would just add to what ma'am said. Ma'am has beautifully actually answered everything. So आर्ग्यू बिल्कुल मत करिए किसी भी टीनेज बच्चे के साथ, बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट की वजह से और कॉन्टिन्यूस रिपीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से बहुत स्टबर्न हो जाएगा. बहुत सही पॉइंट आउट किया आशा मैम ने भी, कि अगर आप बार बार बोलते जाएंगे, बच्चे को पता है उसको क्या करना है, वो आउट ऑफ ट्रैक नहीं है, जस्ट दैट उसके लिए प्रायोरिटी उस टाइम शायद कुछ और है, उस टाइम पे वो उस पर्टिकुलर टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश कर रहा है. तो आर्ग्यू मत कीजिए, क्योंकि जो स्टबर्न बच्चे होते हैं वो हमेशा एक आर्ग्यूमेंट को लीड करने के लिए रेडी रहते हैं, और वो उस आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएंगे तो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में उसके साथ डील करने में बहुत दिक्कत होगी. दूसरी चीज, अपने बच्चे के साथ एक अच्छा प्यारा सा बॉन्ड बनाएं. आप टीचर नहीं हैं, आप मदर हैं, तो आप मदरली रहें. आप इस गैप को जरूर अप्रिशिएट करें, समझें और उसी तरीके से रहें, बिकॉज टीचर ऑलरेडी उन्हें डांट रही है. घर में अगर आप मदरली डांट मारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप भी टीचर बन जाएंगे तो शायद स्कूल से भी मन उठ जाएगा. तो वो एक स्ट्राइकिंग द बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे. तीसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पर एज अ मदर आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जहां आप नेगोशिएट कर सकते हैं बच्चे के साथ. जिसे बच्चे कहते हैं आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, बट उसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे आपके नेगोशिएशन स्किल्स कितने हैं. अगर आप 1 घंटे में ये असाइनमेंट करके, ये इतना सा टॉपिक पढ़ के मुझे सुना देते हो, तो कल आपका कोई फेवरेट टॉय, आपका कोई फेवरेट प्लेस जहां घूमना जाते हो, एग्जाम्स के बाद आपको वहां लेके जाएंगे. अगेन रीइंफोर्समेंट आप उसके साथ बांधो. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड ब्राइब. हम बच्चे को ब्राइब नहीं कर रहे हैं, हम रीइंफोर्स कर रहे हैं. तो कोई भी मटेरियल चीज नहीं देनी है कि अच्छा तूने ये करा तो मैं तुझे तेरी वीडियो गेम ला के दूंगी, which is 10,000, 10 lakhs, 2 lakhs, 5 lakhs, तेरी फेवरेट गाड़ी पापा ले आएंगे. Nothing of that sort. So it has to be not in terms of monetary. पैसे से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. Something which helps him, make him more motivating, make him more emotional, make him more practical towards any entity जो हम उससे अचीव करवाना चाहते हैं. एंड हमेशा अपने बच्चे के जहां उसका स्टडी टेबल है, जहां भी वो बैठ के पढ़ता है, मेक श्योर कि उसका गोल उसके सामने एक बहुत बड़े ब्यूटीफुल चार्ट पे लिखा हुआ है. उसे बस वो याद दिलाते रहें टाइम टू टाइम, और उसके बेसिस पे नेगोशिएट करते रहें. उसकी रूटीन अच्छी बनी रहेगी तो आपको इतना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, उसके पीछे पड़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. Thank you so much, ma'am. I think Prerna ma'am has found her answer, and now she would be able to, take care of her concerns. Thank you so much for that. Certainly, ma'am. Thank you so much. You have given me a new angle to think. I was not thinking that way. Thank you so much. Definitely, I'll do the needful. Thank you, ma'am. Okay, so now we have another question. It is from Sumaya Attar. So Sumaya, would you like to unmute yourself and ask your question? बहुत ही सिंपल सा सवाल है सुमैया का, but yes, we need to take this. Sumaya, can we hear from you? Good afternoon, ma'am. Myself Sumaya. Yes. I planned every time things according to schedule. Like whenever timetables comes, I plan things according to that particular schedule only. But things won't work according to that plan. Whenever I ask something to my child, he like बाद में कर देंगे. Fail भी हुआ तो क्या होगा? That is okay, mommy. That type of answer comes from my son. I mean, like. So what to do? I wrote and all those points whichever you mentioned just now. Just don't argue. Give some responsibilities. Build some kind of bond with him. I'm doing that thing, but somehow we become little rigid. आई एम सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन इनिशियली नहीं सुन पाई. आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी. आपने ये सब प्रैक्टिस किया है, बट क्या नहीं अचीव कर पा रहे? So, ma'am, I planned certain things for a month or a day, but things won't work according to that plan. Okay. Due to some or other issue. Okay, and can you tell me what are those issues?
like if I plan like you will study this to this you will study this topic for this to this time, he that topic will not cover in that particular time, or sometime he won't sit for the studies like that. Asha ma'am, go ahead. Okay. ये जो आपने बोला है ना, I think I plan से ज्यादा अच्छा you can do we plan. Yeah, sit with your child and plan together कि क्या क्या कर सकते हैं, उससे पूछ के प्लान बनाइए. ठीक है, आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी बताइए, बट उसका वो क्या चाहता है वो भी कंसिडरेशन में लीजिए. दूसरी चीज, गोल्स चेक कीजिए whether they are realistic or not, right? और तीसरी चीज, अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि फेल ही हो जाऊंगा और उससे ज्यादा क्या होगा, दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी फियरिंग, उसमें ऑलरेडी डर है, एंड ही हैज ऑल थॉट कि ये हो जाएगा तो अब मैं यही करूंगा, मतलब वो अपने आप को कन्विंस कर चुका है. ठीक है, इस सिचुएशन में उसका फियर कम करने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू शेयर समथिंग पर्सनल, समथिंग जो आपने किया है when you were scared and how you overcame that. I think that will really relate with them और उसको help होगी उस चीज. Actually, ma'am, he never failed, but he made such kind of statement in front of me. So I developed some kind of fear कि he may in future, you know, he was telling like this. So I was like, oh my God, अब ये ऐसे बोल रहा है, अभी क्या होगा पता नहीं. शायद आपको strength दे रहा है वो. उसको लग रहा है ज्यादा डर गई है. वही एक्चुअली होगा शायद, पता नहीं. बट सुमैया मैम, आपके साथ ऐसा नहीं होता कभी कभी जब हस्बैंड से कोई काम कराना होता है तो आप बोलते नहीं हो ये कर दो वरना देख लो खाना नहीं बनाऊंगी? डजंट मीन आप खाना नहीं बनाते हो. तो बनाना ही पड़ता है मैम. एग्जैक्टली, तो बच्चे को भी ये बोलना ही पड़ता है, ये बताने के लिए कि इतना ज्यादा पीछे मत पड़ो, मैं कर लूंगा अपने आप. Okay. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Most welcome. Thank you so much, Sumaya ma'am. I think you have found your answer, and you have also found an way to deal with the adults also in a way or the other. But yes, having said that, that was it. All the life questions have been taken and beautifully answered by our panelists. Thank you so much for that. And now, without making any delay, I would like to take this opportunity to bring out the names of the winners. So the sharpest questions, as I have already mentioned earlier, there will be two winners. So the first winner's name is Nachiket. So Mr. Nachiket, congratulations. You have been, your question has been chosen as the sharpest question. And another question is from Ms. Sumaya, because we found that is one question that was the sharpest, and so many of them, so many of the other mothers and parents could relate. So congratulations to both the winners. Somebody from our communication team will contact you shortly and will give you a voucher. All right, so on that note, I personally had a great time talking and learning so many things from all of you today. So thank you so much for being there on this webinar. Now we have a very small feedback on screen. So kindly spare some time to fill this feedback. And any of your questions, if it is left unanswered, please feel free to post it using hashtag webinar by Sharp on social media platforms, and we will try our best to answer these questions as soon as possible. Once again, thank you to all the panelists who have been here with us today. Thank you so much. And yes, for the other attendees, you will get the participation certificates in your mail within 2 to 3 days. And so kindly please check your emails, and also take out some time to check your spam in case you don't find any certificate. And also for further updates on our work and webinars, please subscribe to our website www.schoolindia.org. Thank you once again, everybody. Have a very great week. Thank you so much, Shaheen, for having us. Thank you so much. It was wonderful being here. Yeah. Pleasure, ma'am. So we can leave? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.